सिर्फ 2 लोग आज के पॉडकास्ट को देखें, अपने आप को इंस्पायर करें। आपकी किर्त आपके पर्पस की मुरीद हो, क्या बात। सज्जन साथी बहुत मिल जाते हैं। Tell us some tips for social media for young architects who are starting their firm. क्या करना चाहिए? जो भी आप डालेंगे सब पे होना चाहिए। You think it's important to be in the limelight and social media is important? इट्स वे ऑफ सेलिंग। फर्क पड़ता है इससे? रील्स में ज़्यादा कवर के लिए मैनिपुलेशन आनी शुरू हो जाती है। One of the reasons I came on the podcast, I don't know whether you put it in the video or not, but see, I saw that there were genuine architects coming to it. AI के बारे में what do you feel and what is your take on AI? AI makes your research much more 10x's your research. Luxury meaning for you. Something that stays the test of time. One habit which keeps you grounded and humble. So one designer you love to collaborate with. Hello everyone, welcome to Journey with CJ Season 2. Today I'm sitting with someone whose work I've admired for a while now. From his roots in Amritsar to designing all over India and UAE, his journey has been full of bold moves. Let's welcome architect Harkaran Boparai from HBS Designs. Thank you for inviting me. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? All the thank you for inviting me. How are you doing? Perfect. How are you doing? Very well. It's always a pleasure to meet you, be it in the Thank you. form of podcast or in the kind of work that you have done. Thank you so much. से मैं कह सकता कि with your journey I've known ओए पंजाबी आ गए ओए Not a kind of my feel, bro, but हाँ कह सकते हो if that sets well with you. because the reason is that you know when I was studying your journey, you from a small town Amritsar to having offices in Delhi, now Amritsar, Dubai. So I think it's quite inspiring and motivational too. Also, this is the reason why we do this podcast because we want the young audience and the architects to understand the challenges, the journey, how difficult and how easy or whatever to take something from here today. Super. So, welcome again. Firstly, to a great, honest initiative by you. Bringing forth the stories behind the architectural studios and all the guys who work in the design industry. So, firstly, congratulations to you for doing this thing. Thank you very much. And it's completely, purely the reason is I feel that in today's time, everyone has become so busy. Nobody has the time to get inspired or motivated. So, मैंने कहा, let's do something where real stories are spoken about. बाकी तो सब चलता ही रहता है. Done. But coming back to your journey, can you tell the audience about your journey? So we started back from Amritsar. So I belong to the city. Parents have been in real estate. So as a business family, we have been born and brought up around the sector of townships. And so it was always making drawings and getting into plans and everything were always a part of the way we were brought up. And I started studying in a university in Amritsar. And so I started when I was in my third year of college, to be precise. And my sister had just graduated, and we both started the practice called Space 5 in Amritsar. So that was the first move we took in 2018. So by December 2017, we had the office ready. And in 2018, we started with the first project that was a very small townhouse project within the suburbs of the city. And from there, the entire process started. Largely, the fact of the matter is that as I started, then a lot of things happened. When you get into the industry, I feel that there are a lot of plus and minuses that happen, getting to know the client, getting to understand the client, trying to take on. Of course, there is a lot of trust factor that needs to be developed with the clientele. Midway, my internship came through since I was in third year. So in fourth year, my internship came through. I went to Mumbai to work with Reza Kabul. I worked with him as an intern. There was a small internship. I came back, resumed my practice. And graduating in 2020, that was when, the mind got free. And by that time, there was a huge length and breadth of practice that we had already done. It was a good 2 years that were to it. One thing that really made Space 5 into Space 5 was, if you can recall, when I last visited around 2.5 years ago, Space 5 became a brand known for a lot of high luxury work very soon. I guess God has been kind. Vaheguru bahut saath ditta Vaheguru ne de viche. But largely the fact of the matter was that the zeal to do it ASAP, the mode has always been to do it ASAP.
not thinking in terms of months or days, thinking largely in the mode of minutes and hours. That's have been our ideology. And of course, we both of us, it was me, my sister, and me, that we were doing space work. Well, it's very impressive because generally, matlab, not to judge anything, but small towns people are a bit lazy, So I I think would say. But you you talking coming about from a maybe business kind of ASAP is, family, maybe yeah, that's one of the reasons we saw parents and our families do that kind of work. So I guess that has been a good leading point for us, both of that's. us. So tell me one thing, how difficult it was from a small town getting accepted in metros, because this is a transitional which is not easy for everyone. The Hmm. reason I'm asking this question is that I'm sure looking at this podcast, a lot of people will be, you know, wanting to set up office in Delhi or in any metros from small towns, but अभी मतलब हिम्मत नहीं हो रही, या आई एम श्योर कुछ माइंड में पॉइंट्स होंगे, सो कुछ आप ऐसी चीजें बता सकते हो विच रियली इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड यू एंड यू थॉट कि नहीं यार हम तो करेंगे और इसलिए करेंगे. See, I guess if you meet other anyone who has a good setup anywhere in a good city, I don't think so. I think work happens first. You gotta have work coming to you, and your administrative setup comes as a byproduct of that. And that's what happened with me. So we expanded like anything, like a wildfire across the nation. And I was mostly in flight, so going to the spaces, getting things done, getting things moving, and being so we used to have a bare bones setup in Delhi, in Gurgaon, on the Indian island, let's say around 3.5 years ago, with just a small setup where we used to meet the clients. So that happened, but largely the work first. If that comes to you, your administrative setup will definitely be a byproduct of that. So your suggestion to the young audience is that focus अपने काम पे करो और slowly if you have I a. guess that's how it happens easy everywhere now. Hmm. If your aesthetic and your mentality towards your work is top notch and top grade, I don't think so. Anything can stop you, and whatever you want will come to you. Very well said. But मेरा जो एक concern है हाँ जी. कि when you come from a small town, Hmm. क्या acceptance मिल जाती है metros में easily? Because We found it very quickly, honestly. okay, Well, for us, it was not. So I was at Urban Sardar, and you know, and most of my initial clients knew I was still studying. My sister was 2 years elder to me, and we both were like young kids, brother and sister, and people were trusting us with crores of their projects. Just the zeal and the body language that we portrayed and the kind of aesthetic that we had. Of course, there is always a push that you need to put the. I don't think so. The kind of octane I had when I started this, I have that right now. If back then it was the उदो एक octane fuel सी का मेरे विच की इसको लगाना है करना है इस चीज को. Today it's more of sustainability, it's more of slow moves in the right directions. So zeal होनी चाहिए मुझे लगता है. so a take is that zeal is very important. आपने कुछ zeal के बिना होगा नहीं. zeal के बिना होगा नहीं. होगा ही नहीं. I think we all evolve with time. I know when I was when I started my career, तो zeal तो एक अलग level की होती है उस time पे. You want to मतलब ऐसे होता है पंजाब में फाड़ देंगे. मतलब ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬੇ ਬਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Right. ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. आगे. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵਕਫੇ ਫਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫੇ ਫਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Agreed. If that is there, ਅੜਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. And today's world is way more inclined and setup oriented. Accept ਕਰਦਾ ਹੈ. In case you are putting the energies, rather, I don't know what people say about it. You got talent, you have enough resources today at bare minimum the cost अब तो 20 साल पहला to make a name. Super. Generally जो मेरा experience of discussion with people रहा है कि acceptance is not something which happens very quickly. Clients को लगता है कि यार ये तो small town से आएंगे with due respect I'm talking, not about I'm sure you got a success in this, but journal एक जो metro clients है they have this thing कि यार पता नहीं उनको वो experience होगा या नहीं होगा, but I'm very happy that we listened to this answer of yours, because this will kind of give a lot of confidence and motivation to open up offices in different cities, and I think this is a very key point. So, and again, congratulations for opening up offices in Delhi and other places. I think it's a great achievement. Thank you. So, one
very important point I wanted to discuss with you is that how important, according to you, how do you differentiate working under a firm, freelancing, and having your own? What's your drive? Depends. I don't think so. Everybody can make their offices. I don't think so. Okay, There are super people working for HBS. They have worked for Space 5. Exceptionally talented people. And but ऐसा क्यों बोला आपने? I don't think so. Everybody's not cut from the same fabric. You might want to work in a very contained environment where, businesses are work apart from work. Businesses work without work also. It's a 24/7 kind of a thing you are trying to run. And unless you are a shot in the dark, there are things which you want to do which you normally would not, let's say out of design. So for me, designing is only 2% of work. It's a lot about management, running the operations, making sure everything happens on time. So not everybody has that tenacity, and not everybody should have that tenacity, I would feel so. As an example, so Apple was made by a guy who was a designer, but he was a sharp business guy. Johnny Ive only come karda si, and he's a designer behind iPhone. Everybody knew Johnny Ive. Right. But if ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ he could have made Apple, no, it's not possible. He was a designer. So I think the fabric understand karna. Apart from that, if you put 3 buckets कि freelancing करनी या किसी दे थल्ले काम करना as under a firm or starting your own, I think of course starting your own practice is the highest pinnacle, because the freedoms, the success, the appreciation, the market visibility जो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने work 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. Right. That's always there. But to get to there, your goals need to be very, very clear. Your aesthetic needs to be very, very clear. And sab to smart, your work ethic needs to be super sharp. So, थोड़ा सा elaborate करते हैं इसमें, because it's going to be important for the young architects who are working under a firm. मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ, ठीक है। हर तीसरे चौथे दिन वो हमारे पंजाबी में कीड़ा होता है, कीड़ा या चुल कह लो, चुल आती है, कीड़ा आता है कि यार करते हैं। क्या एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि यार सैलरी जाएगी, काम शुरू कर रहे हैं। कैन यू गाइड मी, यार ये अगर स्टेप्स आप ले सकते हो तो आप काम करो, अदरवाइज जिस जॉब में आप काम कर रहे हो तो आप वही करते रहो। कुछ पॉइंटर्स कि यार अगर आप जॉब से इधर जाओगे तो बॉस ये चीजें। आई थिंक तो सीधी फर्स्टली यू नीड टू आस्क ना कि व्हाट्स योर मोटिवेशन। आपके मन में ये आ रहा है कि आपके बॉस के प्रति खुंदस है या उसकी सक्सेस से खुंदस है, ये कारण है फिर तो नहीं। आपके मन में है कि नहीं यार मैंने आई नीड टू मेक माय ओन नेम, मैं इससे बेहतरीन काम खुद के लिए कर सकता हूँ। आई कैन मेक बेटर डिजाइंस and architecture or interior design, everything is, god forbid, it's a very it's in our country, we are shaping the environment, and बहुत कम लोग हैं, and I know that when I say this, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के काम करते हैं कि यार हम environment shape कर रहे हैं। और अगर आपके माइंड में ऐसा है कि यार आप ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं, यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी इन अ मच बेटर फैशन देन यू आर गिविंग विद योर बॉस एंड द रेस्ट ऑफ योर एस्थेटिक्स। बाकी आपके एस्थेटिक्स आते हैं। So basically what you're saying is motivation is the key. मोटिवेशन, द रीजन ऑफ डाइवेस्टिंग, क्यों जाना है आपने, कारण क्या है, really matters. Very well said. Now let's pick up a very very important point. ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं डिफरेंट गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करता हूँ जी, ऑफ कोर्स। एंड सोशल मीडिया, एंड वी आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोशल मीडिया में, यू आर वेरी मच विजिबल। देयर आर सर्टेन गेस्ट व्हिच आई हैड जो तो बिल्कुल लाइमलाइट में आ ही नहीं आज तक और काम करते जा रहे हैं, और आपकी जो यंग जनरेशन है वो तो लाइमलाइट में है, या आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। You think it's important to be in the limelight and social media is important? It's a way of selling. It's a way of selling. It's a way of selling. You think फर्क पड़ता है इससे? अरे it's like asking Harkaran, like I'm earning money and I don't have an accounts department. It's a branch. See it as a branch of a company, a department that you need to have. We don't say it as social media branch. It's the outreach. It's a crowded world. It's an overseen world, an overheard world. इस वर्ल्ड में आपकी क्या काबिलियत है,
आपके साथ बैठे बंदे को नहीं पता। आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिसने आपसे डिजाइन करवाना है, जिसने आपके द्वारा हार्ड अर्नड मनी का 15-20 करोड़ लगाना है, वो आपको आपको बिना देख के पहचान जाएगा। मुझे तो ऐसा आता कोई सज्जन मिला नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड मेड बाय एंड सीन थ्रू द आईज और वट एवर इज प्रोजेक्टेड टू इट। सच झूठ मुझे पता नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट। तो आपकी जर्नी में इस चीज को हम एक रेलेवेंट फैक्टर दे सकते हैं? नॉट द रेलिवेंट फैक्टर। नहीं। माई सक्सेस इज कंपाउंड ऑफ माई वर्क, तो माई इस प्रोजेक्शन इज अ कंपाउंड ऑफ माई। ऑफ कोर्स डिलीवर तो करना पड़ेगा। आप काम नहीं करते हैं, यू टेक अप क्लाइंट्स, दे नॉट सेटिस्फाइड, कुछ हो नहीं रहा है, कितना ही बोल लोगे ना आप, कि कितना ही बोल लोगे। देर विल बी अ डे विच कम्स थ्रू टू यू विच सेज ना ना यार, ही इज जस्ट अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और आपके काम को जोड़ा नहीं जा सकता। एग्रीड। आपका काम और आपके प्रोजेक्शन एक दूसरे से 10% का अंतर होना है, समझ आता है कि 10% का अंतर है। अगर किसी की प्रोजेक्शन अच्छी है, उसके बारे में 4 लोग उसको जज करने वाले भी उतने ज़्यादा हैं। राइट। अ मिलियन फॉलोवर्स, दैट मीन्स अ मिलियन आइज ऑन यू ऑन एवरी एक्शन दैट यू टेक। तो जज करने वाले लोग भी तो उतने ज़्यादा है ना उसको। So good to hear that your vision on this part of exposure is very clear कि ये एक important tool है आज एज ए डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, as a आउटरीच department है of the आपका। company ये होना चाहिए हाँ, for any organization which is yeah, working yeah, and I think also कि ये एक success का भी एक सीढ़ी मानी जा सकती है no, kind of, kind of right yes. और with your success please tell us some tips for social media for young architects who are starting their firm क्या करना चाहिए? Firstly, तो I'm not a success yet. मैं हूँ नहीं। So you're saying that, but see, my socials are controlled by my team. But they do a fantastic job, I guess. That's something that you need to ask off the camera from my team. But they do a fantastic But job. I think you're being very humble, modest. I think I appreciate that. But मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रोल मैं भी अपनी कंपनी में सोशल मीडिया का जैसे जर्नी विद सीजे कर रहा हूँ या माय वाइफ हैंडल्स द हमारा सोशल। एक रहता था हमेशा कि जो भी आप डालेंगे सत्य होना चाहिए। सत्य होना चाहिए आपका, पुटिंग द ट्रूथ आउट। झूठ बोलने से द पीपल, आई शुड से झूठ, आई शुड रिवाइज द वर्ड, मैनिपुलेटिव मीडिया प्रोजेक्शन will eat you when late in the life. The right projection sells, it always sells, survives without any PR, without anything else to do, it will sell. वेरी वेल सेड। So people recognize me. I'll give an example. People visit with me in office, मेरे ऑफिस आते हैं, and there are clients who are trying to reach me. Firstly, I'm hard to reach for appointments, and because मैं मिलता क्यों नहीं हूँ, ये नहीं है कि मुझे कुछ कि नहीं मैं नहीं मिलना है, नहीं, because I'm busy with my work। पहला। दूसरा, they're saying me, they know he is a hard to act architect, people recognize that। I'll not agree if something doesn't sit well with me, I will not agree। So that image of being a hard seeking truth seeker, that is what we are trying to sell on my social medias also। I'm not an architect who is doing 1800 handovers in a year, no, I can't do that। I'm a guy who is doing the work that is probably one of the best at my sector। But whatever we are doing it with the most humbleness, most astute responsibility कि यार हमें आर्किटेक्चर कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द इन्वायरमेंट, एंड वो ही सत्य को आपको आउटरीच में दिखाना है। अगर वो आप कर पा रहे हो, आप बैठे, एग्जाम्पल लेता हूँ, पंजाब के किसी जगह था, फरीदकोट बैठे हो, ਉੱਥੇ बैठ के प्रोजेक्शन दे रहे हो कि नहीं यार मैं तो इमरातियां का काम करन दिया, यू आर नॉट डूइंग दैट। पीपल विल रीड इट, आज नहीं कल 10 दिन में पकड़ लेंगे। जब मैं अमृतसर से हम काम करते थे, द प्रोजेक्शन वाज राइट, वी वर डूइंग वर्क ओवर देयर, वी यूज्ड टू सेल दैट, नाउ वी आर वर्किंग हियर, वी सेल दैट, द ट्रुथ। So sell the truth, right thing। ट्रुथ, I think नथिंग that is मैनिपुलेटिव, important। फेयर So बोन्स। मेरे साथ भी मेरी टीम के साथ डिस्कशन चलती रहती है, सर आप ये करो सब। मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए। मेरी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रीडीनेस कम होनी चाहिए बिकॉज कभी कभी आप ग्रीडीनेस में ज़्यादा कवर के लिए मैनिपुलेशन आनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक पेशेंस इज ऑल्सो वेरी की रोल एंड आई एम श्योर One of the reasons I came, one of the reasons I came on the podcast, I don't know whether you put it in the video or not, but see, I saw that there were genuine architects coming to you. You invited me and I'm like, ठीक है, I'll come to the place. For me, it does not matter, you know, कि how much reach it has, how many people are seeing the thing, ना. What matters is कि बंदा कौन है,
इसकी स्टोरी क्या है, right, खुद से एफर्ट लगा रहे हो तो इसकी तो मैच करता है मेरे साथ, right, एस्थेटिक मैच कर रहा है, right, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। right. And also मेरा ये रहता है कि I look, as I said in the starting, कि this is also a purely trust podcast. सिंपल है। आई विश कि सिर्फ 2 लोग आज के पॉडकास्ट को देखें, अपने आप को इंस्पायर करें और मोटिवेट करें। 2 लोग इंस्पिरेशन मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, देखे तो ज्यादा ही, गुड और सो दैट इज नॉट द पॉइंट, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल लुक एट द पॉडकास्ट नाउ एंड दे आर एंजॉइंग, कुछ बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी इनवाइटेड यू, एंड आई एम श्योर जो आप बातें कह रहे हो, लाइक सोशल मीडिया की बात हुई, आपकी जर्नी की बात हुई, ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज, इट्स अ इट्स नॉट अ यू नो इट आई नो व्हाट, बिकॉज वी हैव ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड। तो द जर्नी के पीछे हार्ड वर्क बहुत होता है, फोकस बहुत होता है, ट्रस्ट ऑफ कोर्स इज द DNA ऑफ द प्रोग्राम, एंड यू डूइंग इट वेरी वेल, विच इज वेरी नाइस। एंड आई पर्सनली फील कि हमें अब ऑडियंस को यही कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, जो आपकी एक शुरू से आपने पॉइंट्स बोले हैं, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड visibility is important, and communication is important. I think that's the right way to go about it. So now let's talk about something which आजकल सभी बात कर रहे हैं इसके बारे में, that is AI. आपका वो AI के बारे में what do you feel, and how, or what is your take on AI? How do you think AI will? I guess AI makes your research much more, it 10x's your research. वहीं तक सीमित AI का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन अ क्रिएटिव फील्ड। सो लेट्स से आई कम विद अ वियर्ड आइडिया, अगर मैंने उससे आज से 2 साल पहले ही बात कर लो, चैट जीपीटी से पहले, साल पहले की बात है, हम कहते हैं कि उसको मैंने कैसा दिखेगा, विजुलाइज कैसे कैसे होगा ये, तो मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं उसको विजुलाइज करने में। AI है, उसी टाइम हो सकता है। So visualization of things has become much more faster. What you think in your brain, you can project it out. That has become much more faster. But still, I would feel that somebody is hiring you for your creativity, not for the creativity of an engine that works on data. So that split has to be maintained. AI as a centric tool research के लिए बहुत ज़बरदस्त है. Amazing. We use it extensively when it comes to research for anything. सोच रहे combination work करेगा नहीं करेगा, put it in there, we'll see it. That happens. So, so I was talking to one of our guests, just Karan from Famatics. He said a very nice thing. He said कि AI will be a tool to upgrade the whole system now, and since it is going to be a very important part for the growth, do you feel important part banega ye? So what I feel is that AI is going to be any day, one day it's going to be very soon, it's going to be much more faster than architects' ideas and their calculations and everything. Somebody asked me that what will keep architecture alive? Do you know that architecture as in general is a dying profession? Is it? It's a dying profession. And I've said it multiple times. I've spoken in probably all the good universities in the country. I spoke at SPA, I spoke at IIT. And I told them very clearly that you study the metrics. Study the metrics of all the top professions in the world. It's a dying profession. It's the least invested profession, the least upgraded profession, architecture. Can you explain more about this? So, architecture studios, so everything is calculated in terms of the compounded growth rate that any profession has. Architecture has the lowest amongst all the good professional courses or the professions we talk about, doctors, dentists, researchers, anything. It's not as invested, it's not centralized, it's saturated, and it's widespread, it's not connected. Everyone is practicing architecture in their own terms, but it has a huge impact. And AI has come, अब AI भी आ गया है, a lot of things are being generated. पहले Pinterest था, आधे लोग सोते थे वो आर्किटेक्ट्स हैं, अब AI आ गया है, उनके बच्चे सोते हम आर्किटेक्ट्स हैं. What, that's my question to you. Ask it to your other guests. What will keep architecture alive? Quantum computer आ गया है. There was this tool Sora that ChatGPT made. Yes. That's making bloody hell good videos that were made with these red cinematic cameras. वो भी नहीं बनता, इतना अच्छा बना रहे हैं. नहीं बन सकता. What will keep architecture alive? So a good take from you. I think So architecture stays alive only by the fact that you are bloody genuine with what you do. What makes CJ CJ, that is important. right. So that will stay. और कुछ नहीं रहेगा, that will stay.
If you are just a wannabe, you are just another one of them. Dispatch. There's a book written by Yuval Noah Harari, and a lot of people must have Homo sapiens. Sapiens, sorry. So read that. He says that but this year, this many professions will be disparaged because of non-upgradation. The most genuine ones will survive. Truest to them will survive, and that's what's important. पर हमें तो ये लगता है कि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटी स्टेटस आप लोगों ने देखा है या देख रहे हैं, ये कभी आया ही नहीं है। But that is a different thing, ना? वो अलग चीज है. People have money, they're putting money. There are companies like you, companies like even more who are making good products, and architects are playing with them. Yes. That's a totally separate ball game. Right. But if so I did a venture prior to HBS, which brought a lot of architects on single panel. So we'll talk about it someday later. And over there we got to understand that most of the top architects जो हैं बहुत limited है जिनके पास the thickest work है. Right. You know it for a fact. कितने को आप गिनती कर लोगे? बट आर्किटेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं देश में. हर साल 25-26 हजार लोग ग्रेजुएट करते हैं. वो कहाँ जा रहे हैं? The point. So a very pristine, a very small amount of the ultra celeb architects. डिमांड सप्लाई में मतलब सप्लाई बहुत है. Supply is a lot of there. Supply is a lot of there. A lot of them are wannabes. A lot of them don't have the way to project them out. Genuinity का कमी है. और उस तरह से वो चीज को resurrect नहीं कर पा रहे हैं. अगर कर पा रहे होते, तो do you believe that the kind of supply we have for architects, तो हमारा यहाँ का built environment ऐसा होता? It would not be like that. It would have been way too good, way too blessed. So the way it is, one of the reasons is this. Right. So I think that is one of the cause factors. So let's talk about let's get back to your journey. So थोड़ा सा आप ऑडियंस को एक्सप्लेन करो अबाउट योर चैलेंजेस कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए फॉर सेटिंग अप न्यू ऑफिसेज, गेटिंग न्यू क्लाइंट्स. आपने क्या चैलेंज था, क्या स्ट्रेटजी करी और क्या स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई, सो दैट it's a good take for them to understand. So I can tell you the right things, not the wrong things. So I'll tell you the right things. Okay. Yeah. So firstly, your employees should genuinely love your company. सभी नहीं करेंगे. 8-10 जन ऐसे हों जो आपके जितना एटलीस्ट प्यार आपकी कंपनी को करें. पहले तो उन बंदों को बनाओ. मिलेंगे तो नहीं, बनाने पड़ेंगे. Right. वो बनाओ. Right. वो जो ओवर टाइम लगाएंगे, आपसे ज्यादा टाइम बैठेंगे. जरूरी नहीं वो स्टूडियो टीम ही हो. आपके ईएज, सेक्रेटेरियल, मेरे साथ जैसे जो टीम होती है, सो दे आर वेरी इन्वेस्टेड इनटू द वर्क दैट आई एम डूइंग. द राइट पीपल मैटर. और ये मुझे गड़बड़ भी हुई थी व्हेन वी स्टार्टेड. वी कुडंट फाइंड दोस पीपल. सो इनिशियली वो हिकअप्स आते रहे. Right people is one point. Right people is a super genuine point. Set up, think like a 500 strong company from the get go. जब शुरू कर रहे हो ना, तभी सोचो कि 500 जन आपके लिए काम कर रहे हैं. आपका मैकेनिज्म एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसकी झलक देता हो. द वे यू टॉक, द वे यू अटेंड कॉल्स, द वे यू मीट विद पीपल, उतनी झलक देता हो कि किसी दिन तो 500 जन की कंपनी बनेगी ना. ये कि जब 500-600 लोग काम कर रहे हैं, वो है. अगर वो नहीं होता है तब भी आप सफर करते हो. So I can say कि आप पहले दिन से अपनी डीएनए जो है गेट गो होना चाहिए आपका. DNA ये तो 500 पे तो बैठे ही हैं, आ जाएंगे, अभी नहीं कल परसों का. दैट थॉट. वो फिर आपको क्वेश्चन करेगा, अच्छा यार अगर 500 के लोग हैं तो मुझे तो फिर इसकी भी जरूरत है, मुझे तो इसकी भी जरूरत है, मुझे सिस्टम की भी जरूरत है, मुझे इसकी भी जरूरत है. चाहे ज्यादा लगेगा इनिशियल में, बट वो आपको हेल्प करता है. कुछ ना कुछ ज्यादा बेहतरीन कर जाएंगे. राइट. वो भी सफरिंग थी इनिशियली. व्हाट यू स्पीक, undersell, over deliver should be a mantra. And the most important, take the right clients. Take the right clients. See, आपने जो बोला टेक द राइट क्लाइंट्स, अब दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन हियर, बट अब आपने बात करी थी टेक द राइट क्लाइंट्स, तो ये भी आप ऑडियंस को बताओ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट क्लाइंट्स. जो आपको आर्किटेक्ट समझते समझते आपकी बहुत रिस्पेक्ट करे, बेहद, धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा. वो क्लाइंट रहेगा नहीं.
वही आपका क्लाइंट, बाकी इज नॉइस। सो मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट्स को जर्नली, बिकॉज और ये रेजिडेंशियल क्लाइंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे ज़्यादा फोटो उसमें है। सो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि हम्म, जो क्लाइंट्स हैं वो आर्किटेक्ट को जब हायर करते हैं हम्म, या इंटीरियर डिजाइनर, सेम थिंग, बहुत सारे पैसे लगते हैं उनके। सो एक रिस्पेक्ट तो म्यूचुअली आ ही जाती है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा भी होता है कि दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एट टाइम्स क्लाइंट्स नहीं देते आर्किटेक्ट्स को? अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी कारण से, देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इट, पर अगर वो जेन्युइन है फिर वो, फिर फाइट भी समझ लगती है ना, फाइट क्या है, फाइट थोड़ी, मतलब वॉट एवर इट इज, अगर डिसएग्रीमेंट है किसी चीज को, जेन्युइन है, बट ऑन अ गुड डे, ऑन अ गुड शाइनी डे, आप उनसे बात कर सको, समझ सको, यू कैन डिस्कस द प्रोजेक्ट जिसके लिए उन्होंने आपको हायर किया है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो पीपल शुड, वी शुड टेल पीपल टू सी आर्किटेक्ट्स एज सर्जन्स। सर्जन के हाथ में आपके किसी रिलेटिव का सर्जरी का जुम्मा हो, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। राइट। तो वो थॉट मन में होना चाहिए, एज इम्पोर्टेंट। बट आपको भी लगता है कि अभी वो रिस्पेक्ट ये में बहुत है, बहुत है, टाइम मेरे तो सभी बहुत देते हैं मुझे। टाइम लगेगा? आपको लगता है अभी टू अंडर क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड कि द काइंड ऑफ आई थिंक वर्क यू गाइस डू? लोग नए आते हैं इंडस्ट्री को, उनको पता, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। राइट। अब हम मुझे अभी इतना टाइम हो गया है, तो मैं तो आई वोंट इवन टेक अ क्लाइंट लाइक दैट, हाँ, आई अंडरस्टैंड। एंड लॉट ऑफ द सक्सेस ऑफ द आर्किटेक्ट इज बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ क्लाइंट ही इज सर्विंग। राइट। वो उसके ऊपर ही है ना, कि सैनिटी बरकरार रह रही है क्योंकि उसके क्लाइंट्स बहुत सही हैं। सो अब हम इतने बारी क्लाइंट्स के बारे में बात कर रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ योर मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। श्योर। प्लीज बताओ। So for me, the interesting project, the most loving project, if you say, यस। was the making of Gurudwara Goindwal Sahib. ओके। So Sikhi Siddhant ਨਾਲ जुड़ी हुई जगह, ऑब्वियसली। and Guru Amardas ji di tha, and from where he started the main Tura. So Goindwal Sahib is called the Tura of Sikhi, राइट। and Guru Amardas ji ने रीत चलाई सी कि पहला लंगर, फिर पंगत, फिर संगत, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, and there is a car seva sanstha based out of Amritsar, and they hired me to redo it. Of course, we did it at zero monetary expense, and it turned out to be a fabulous job. And just getting the chance to put one pencil in that space, which has been the center of Sikhi, and honestly, everything changed for me after that. ਸੋ That was my most loving ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Goindwal Sahib. ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈक्ਟਲੀ? So Goindwal Sahib is almost 45 minutes from Amritsar. ਓਕੇ। So Goindwal Sahib is the place where Guru Amar Das ji was there, ਰਾਈਟ। and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ, ਮਤਲਬ of course ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਈ, ਆਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੰਜੀਆਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ, ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਲੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਲੰਗਰ, ਤਿੰਨ ਭਗਤੀ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ resurrection, renovation, reduation ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਈਸ। and we got to do that. We did it in a breakneck time. Of course, the development was super fast. It happened 24 hours without stop, and in 3 months we got almost, the entire slab area was around 80,000 square feet. 80,000 स्क्वायर फुट? 80,000 square feet. Oh, It just got done, 80. and first time I saw the entire slab getting divided into 4 sections. इधरों भी slab पै रही है, उधरों भी slab पै रही है, इधरों भी पै रही है, उधरों भी पै रही है, इकट्ठा काम चल रहा है, and they're like अमेजिंग। amazing work. कितने साल पहले से? ये 8-9 महीने हुए होने। अच्छा, दिस इज Yeah, very. अरे it's a viral. If you don't, I don't know. It's a super viral thing. With the redevelopment of Guru Goindwal Sahib. So it was with the licensing of the government of Punjab, plus the Car Seva Sanstha, plus SGPC. माता जी ने 100% बताएगा। उन्होंने बताएगा. So that was the most loving project. And if you ask me the most creative project, that is I'm getting to do it right now. Would you like to talk about it? Yeah, so it's based out of a little remote area, not in the central zone. That is the farmland of a client. We're going to do it over there, and super crazy work we're doing. की कर रहे हो तुसी? What are you doing? It's a development of a farmland residence only. ते एक फार्म है या फार्म कट मतलब? So farmland, बड़ा सारा farmland, बड़ा सारा farmland. We're going to do a farmland development. Everything that you can imagine for a multi-millionaire, we are making it over there. Okay. नहीं, trying to understand the work.
कि फार्म्स काट रहे हो आप या किसी के लिए फार्म बना रहे farmland ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ farmland ਆ हो? ओके, so making their coveted residence over there, like what doing amazing shit over there, amazing stuff, अच्छा, that's amazing stuff. nice. And Total miss बहुत. so what is the size of the कुछ project, the size? Farmland is almost 15-18 acres 15 acres. जगह ही है, जगह ही है। बाकी there's amazing story there. ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ that kind of a thing. I've understood your approach of work कि बातें कम करो काम ज्यादा करो so which is similar to what you guys are doing, I guess. which is nice. Anyways, excellent. So let's do our last round which is a rapid fire. मेरा रैपिड फायर वैसे रैपिड फायर नाम का है बिकॉज जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं वो रैपिड फायर को रैपिड हटा देते हैं, फायर हटा देते हैं, आराम से आंसर देते हैं और पूरे बड़े बड़े आंसर्स देते हैं. सो आई अंडरस्टैंड बट लेट्स ट्राई इफ यू आई कैन हैव सम काइंड ऑफ रैपिड फ्रॉम यू. So first question is your love for either classical or modern. Mixed. Luxury meaning for you. Something that stays the test of time. Timeless. Social media tip. Be genuine as long as you are there. Be genuine. One habit which keeps you grounded and humble. Getting up super early in the morning. What Getting time? up super early in the morning. Every day what time you get up? Super early. Super early. नहीं सुपर अर्ली बताओ ऑडियंस को सुपर अर्ली क्या होता है. यहाँ पे आजकल डिजाइनर्स आर्किटेक्ट्स आराम से उठते हैं. कहीं अपने यंगस्टर्स तो हमारे यहाँ पे उनको यंगस्टर्स को तो ये लगता है कि हम जितने भी लोग हैं ना सारे प्रिविलेज्ड हैं. सबको पता नहीं पीछे से I think to live the longest and to live the happiest किसी चीज की जरूरत नहीं, बस जल्दी उठ जाओ सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे 5 5:30 जब आपका दिल करे पर उठ जाओ जल्दी. अगर लंबे समय तक खुश रहना है जल्दी उठ जाओ. आपको लगता है मॉर्निंग हैबिट से खुशी अरे मिलती है? आपको कुछ तोड़ ही नहीं सकता. nothing will break you. Really? Try that. So one designer you love to collaborate with. Kelly Wessler. Quote of mantra to live by for you. Your quote. Honesty before delivery and truthfulness before work. ये तो प्रोफेशनली हो गया. यही है मेरा honesty. लाइफ के लिए क्या है? पर्सनल लाइफ भी होगी कुछ? पर्सनल लाइफ लंबा है फिर ये. आई वांट टू डू एज मच वर्क एज आई कैन बट आई ऑलवेज इट्स माय प्रेयर टू वाहिगुरु दैट मेक श्योर दैट इट्स ऑलवेज पर्पस ड्रिवन. फालतू काम नहीं मैं कर सकता. इफ यू से मेरे मनी के लिए करना है दैट्स ऑलरेडी माय फैमिली हैज डन इनफ फॉर इट. दैट्स नॉट द रीजन फॉर माय वर्क. मतलब ऑलवेज एवरी डे सिंगल डे ऑनेस्टली जिस दिन मुझे मतलब भूल भी जाए ना कि पर्पस क्या है, हाँ आई कांट डू वर्क. मुझे कारण पता होना चाहिए. कारण लॉन्ग टर्म कारण क्या है इसका. और मनी नहीं होती आपकी. अवार्ड्स फेक और रियल. अगर आप भाग नहीं रहे हो उसके पीछे, लोग दे रहे हैं, बहुत असल है जो अच्छा एक्टर्स के साथ होता है. इसके बाद I'm going to take another one. So they're giving it. I don't know whether so अपनी कॉल अपने आप आ रही है तो वो रियल है और अगर किसी से कॉल करवा रहे हो तो फिर अलग है. तो अलग बात है. अलग बात. I know. 3 architects of India you really admire their work. इंडिया का पता मतलब what they have worked here. Charles Correa, love his work. Corbusier standard because we studied him a lot. Yes, सारे मतलब big fan of. We studied him a lot. That's again because we studied him a lot. मैंने वैसे 3 इंडियन आर्किटेक्ट्स पूछे थे आपसे बट आप so he made चंडीगढ़ man. so वो फ्रांस का कहाँ रह गया वो बंदा. so Charles Correa great and दोषी साहब तो लेजेंड. दोषी साहब. एक फर्म और है HBS. नहीं मैं तो नहीं हूँ भाई. मैं तो नहीं हूँ. मैं ही बोल देता हूँ इंडियन आर्किटेक्चर. आप तो इंडियन आर्किटेक्चर फर्म नहीं. HBS. One thing and you have to be honest which nobody knows about you. There are a lot of things people don't know about me. एक बता दो. स्पेसिफिकली है नहीं ऐसा कुछ ना कि बहुत कुछ है ऐसे बहुत बड़े पॉइंट्स लोगों को नहीं पता है कि ऐसे या तो कोई भुलेखा होना कि लोगों को भुलेखा है यार ये भुलेखा है लोगों को तो वो अलग बात. सीक्रेट निकाल. ओके सीक्रेट नहीं है. काफी टाइम पहले लोग ये सोचते थे कि मैं सिमरन हस्बैंड वाइफ है क्योंकि हम लिखा होता है सिमरन बोपराय हरकरन बोपराय. फिर लोगों को बताना पड़ता है कि भाई वो मेरी बहन है. तो हम बड़ा चिल मोमेंट होती है हमारे लिए. लोग कहते थे भाई तो दोस्तों बोपराय को बुलाओ. ये तो हस्बैंड वाइफ ये भुलेखा है लोग. नहीं बट जैसे वन थिंग that you are a good singer या bathroom singer. I'm very good in I am just generally I am good in debating and people don't know that.
I'm socially, I don't like to be a part of parties and all that. मेरा forte नहीं है, जाना पड़ता है, that's nothing. But Are you an introvert? no, I'm not an introvert. Not introvert. I'm not interested in socializing a lot. But if you put me in front of, let's say, podcast I'm a forte, so I'm the most comfortable. I honestly आपसे मैं इतनी बारी मिला नहीं, but जितना भी मैं मिला हूँ मैंने अंडरस्टैंड किया है कि you want to use your energy. I am a big fan of energies now. मतलब मैं एनर्जी पे बहुत वैल्यू करता हूँ. मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी को राइटली यूज करना चाहते हो. बड़ा सिंपल पीरियड है कहते हैं जहाँ honestly, if I tell you थोड़ा सा मुझे आप blatant truth बताऊँ ना, हाँ blatant truth I चाहिए. have come forward as very arrogant to a lot of people because मैं चुप रहता हूँ कि ये बंदा जब let's say I'm in a party, I'm not talking, no you're not because I don't drink. मैंने भी जाके पानी पीना है, कॉफी पीनी है, and I'm like little quiet and I'm talking to the people जिनको मैं जानता हूँ, little bit, you know, like that. So that has made me feel, a lot of people have, कईयों ने मुझे बोला हुआ है कि हरकन you come off as very arrogant. वो तो है ही नहीं. मुझे generally socializing में what I like is that whenever I'm somewhere, ये brag नहीं है, if I'm the center of attention in that जगह, वो मेरे लिए सबसे comfortable जगह है. I'm very good being the center of attention. ये मेरा क्या कहते हैं, मेरा हॉटशॉट पॉइंट. I debated for my university, represented it at nationals जब मैं यूनिवर्सिटी में था. आपके ना दो साइड्स हैं जो मेरे को आपसे थोड़ा बात करके समझ आई है. यू लाइक यू सेड यू डिबेटेड. जनरली डिबेटेड लोग तो बहुत सुपरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं. हाँ, बिकॉज वरना ये मेरा है, ये मेरा वरना तो पॉसिबल नहीं ये है. सेक्टरल. आपकी एक साइड वो है कि जिसमें एक तो आपने सडनली अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया, हाँ, और एक साइड है जो आप सडनली अपने आप को बिल्कुल रिजर्व कर दिया. यू आर नॉट टॉकिंग टू पीपल. लोग आपको एरोगेंट समझ रहे हैं जबकि है नहीं. आप बिकॉज सी अब सोशलाइजिंग कईयों की Socialize प्रेफरेंस है. आपको पसंद हाँ, नहीं कईयों है. की प्रेफरेंस है सोशलाइज करना की, और पार्टी हो रही है, चलते हैं. अब कितने इवेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर के. आई नो बहुत. मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे 20-30 कॉल बज गए हैं, भाई तूने आना है, या माय टीम इज कन्विंसिंग मी हरकरन जाना है, तो आई मेक माय प्रेजेंस. एंड चलो एक तो थैंक यू. मैंने आपको नहीं नहीं call नहीं for नहीं करे. ये तो आपको मैंने एक या दो मैसेज में आप आ गए, ये भी मैं अप्रिशिएट करना है आपसे. बट जोक्स अपार्ट, इट्स गुड कि यू नो व्हाट यू लाइक आज की, एंड यू आर नॉट रनिंग आफ्टर थिंग्स व्हिच पीपल जनरली गेट टू. मैं कह रहा हूँ आपका काम पर्पस का मुरीद होना चाहिए. राइट. क्या बात है, काम फोकस. योर्स इज अ फोकस. मैंने आपको लाइन दे दी है, आपकी किर्त आपके पर्पस की मुरीद हो. क्या बात, सज्जन साथी बहुत मिल जाते हैं. नाइस. सो आप ये कह सकते हो कि आपकी शायरी और शेरी ये भी बहुत एक आपका ट्रेट है जो किसी को पता नहीं है. तो आई थिंक दिस इज आल्सो समथिंग आई कैन मेक यू कैन टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर. में भी पूछे आपसे कि आओ बैठो मेरे साथ, ड्रिंक आप लगाओ, मैं ग्लास में पानी पीऊंगा और आपको शेर शायरी सुनाऊंगा. सो क्रेजीएस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट. Supply us a housekeeping team after the project is done. ये मैनेज कौन करेगा इतना बड़ा चीज. रियली. एंड आपने किया है ये? नहीं मैंने किया, मैं कौन से किसको नहीं, मैंने क्या कोई ने करना. नहीं आपने सीरियसली हाउसकीपिंग टीम को अरेंज किया? ना मैं क्यों करूंगा यार, मैंने मना ही करना था, बट दैट वाज अ रिक्वेस्ट. अच्छा रिक्वेस्ट थी. हाँ कि ये भी एचपीएस इज कॉलिंग हाउसकीपिंग में. ये हाउसकीपिंग अरेंज करके दो भाई, मैनेज कैसे करेंगे प्रोजेक्ट. नाइस. यू कंसीडर योरसेल्फ अ यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर as of today? No, no, Huh? no, not yet. Not yet. Not yet. Okay. Any deadline or something? Not a deadline, maybe a couple of benchmarks that I need to achieve. One benchmark. We need to compete directly with the top जो लग्जरी डिजाइन में भी काम कर रहे हैं ना दुनिया भर में, उनमें एक शुमार होना चाहिए एचपीएस आने वाले 1-1.5 साल में. इतना फास्ट गोल मैंने रखा हुआ है, हो 1 साल में हो 5 साल में मुझे पता नहीं, इतना फास्ट गोल है मेरा. मतलब you want to do a project which is a लग्जरी लेवल पे भी नाम नहीं है ना अभी. इंडियन बहुत कम आर्किटेक्ट्स इंडिया के जिनका लग्जरी ग्लोबल लेवल पे नाम है, मुझे तो नहीं दिखे आज तक. इंडिया से ऐसे कोई निकले हो कि जिनका इतना हो. लाइक आप लेट्स से आप एक फेरिस रफॉली के साथ खड़े हैं, उसके बराबर बैठ रहे हो, वो कैली वेस्टर के साथ बराबर चल रहे हो, उस लीग में जब आप एंटर कर जाओगे तो दैट इज लाइक यू हैव अ राइट. बट वो लीग को अचीव करने के डोंट यू थिंक यू आपको एक हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं या आपको बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं? नॉट एट ऑल. यू कैन जिनका मैंने नाम लिया है दे आर मोस्टली रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स एंड दे डू कवर्टेड हॉस्पिटैलिटी. वो रिवर्स करते हैं. सो दे विल मेक 90% रेजिडेंशियल वर्क, 10% हॉस्पिटैलिटी वर्क्स व्हेन यू नो दे आर रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन. बट जो सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हैं वो जनरली इस लेवल के जो है
आपको लगता नहीं कि अभी वो ट्रस्ट क्लाइंट्स का इंडियन आर्किटेक्ट्स पे नहीं, हाँ फॉरेन आर्किटेक्ट्स पे है? तो वही ना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए ना, ये मॉडल रिवर्स हो सो आप जाए, वो चेंज करना चाहते हो? होना चाहिए, मतलब सबके लिए हो ना, मेरे लिए हो जाए काफी है। सो आप ये चाहते हो कि आपकी बेंचमार्क में कि हाँ, ऐसा बेंचमार्क एक्सपीरियंस नेम कि हो हाँ जो कि एक हाँ फॉरेन आर्किटेक्ट की जगह इंडियन कि जब आर्किटेक्ट लोग हरकन बोपाराय को सुने तो आ जाए, आ जाए। ये चीज है प्लीज। एडवाइस टू यंग डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स? टेक बोल्ड रिस्क्स अर्ली ऑन इन लाइफ। मैंने 23 साल से भागना शुरू किया था, अब जाके यू गेट टू दैट स्टेचर कि यू नो टेक बोल्ड रिस्क्स। जब फैमिली नहीं है, जब यू आर यंग, यू आर अलोन, यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन, टेक बोल्ड रिस्क्स, रियल बोल्ड रिस्क्स, तब बात बनती है। बट फ्रॉम योर अर्लियर कॉन्वर्सेशन विच वी हैड, आपने कहा कि वो जील और वो मोटिवेशन होनी चाहिए। वो भी एक अपने में रिस्क है यार, इतने जील से काम करना, आगे क्या पता निकलने चीज की नहीं निकले, इवन दैट इज अ रिस्क इन इटसेल्फ। आप इतना कुछ झोंक रहे हो अपना किसी किसी चीज में, क्या पता वो निकलना नहीं निकलना है। आज के समय में तो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि छोड़ो यार, इतनी ताकत से अपना सब कुछ लगा देना उस चीज में, सब पूरी शिक हाँ शाहरुख खान का जो डायलॉग है, पूरी पूरी शिद्दत से शिद्दत चीज को, से करूँ हाँ पूरी आ पूरी जाएगी। पूरी चीज, That's nice, nice, nice. हाँ But anyways, thank you very much. मोस्ट Again, I think मुझे बहुत मज़ा आया सेम, आपके सेशन से, बिकॉज विद योर एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ सक्सेस आपने अचीव करी है एंड द काइंड ऑफ सजेशंस आपने दिए हैं, आई एम श्योर इफ सम ऑफ देम टेक दैट विद देम, बिकॉज जब हम यंग आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स या कोई भी जिंदगी में प्रोफेशन में होता है, मुझे लगता है कि वी आर ऑलवेज वेरी कंफ्यूज्ड, यू नो, वी डोंट नो वे टू गो बिकॉज राइट मेंटोर नहीं होता या राइट लोग नहीं होते समझाने के लिए। तभी आजकल पॉडकास्ट बड़ी पॉपुलर हो गए हैं बिकॉज पीपल वांट टू नो कि व्हाट इज द जर्नी, क्या मोटिवेशन मिलती है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। सो आई थिंक आज का टेक जो आपका है वो मुझे लगता है कि इट विल बी गुड फॉर पीपल अराउंड एंड स्पेशली फ्रॉम स्मॉल सिटी टाउन्स जिनकी एक एस्पिरेशंस हैं कि वो बड़े मेट्रोज में आए और अपने ऑफिस खोलें। तो आई एम ग्लैड आप आए आज एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ योर थैंक यू सो मच, जर्नी, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, थैंक यू, हैड अ ग्रेट टाइम। सेम